Welcome to Vanik Smart Classes. आज आम डिस्कसन करबा ओ ट्रिपल एच आरआई रा some selected questions. First question is that ALU and CU have a special purpose locations called as. I mean ALU and CU have a special purpose locations called as. Actually ALU and CU have special purpose location called as register, motherboard, socket and none of these. So right answer I am kariba register. Register is always present inside the CPU or central processing unit. ALU and CU are always inside the register. Next question, which language is directly understood by the computer without translation program? So basic is a high level language, assembly is also a low level language, but machine level language is a direct understandable language. So answer is machine level language, the language directly understood by the computer without translation program, that is machine level language. Basic C assembly also, basic and C is a high level language, assembly also a low level language, but machine language is directly understood by the computer system. Next question, which one is invalid line spacing in MS Word document? Single, double, triple, multiple. Which one is invalid line spacing in MS Word document? That is triple line spacing is not valid in MS document. So single is valid, double is valid, or multiple also valid, but the invalid line spacing is triple. Next question, the decoded instruction is stored in dash. The decoded instruction is stored in dash. Register, MRL memory address register, IR instruction register, none of these. So it is right answer la instruction register. Instruction register is a special register inside the CPU, is special used to decode instruction stored in memory. The communication line between the CPU, memory and peripheral is called as. The communication line between the CPU, memory and peripheral is called as. Option is register, motherboard, bus, none of these. Actually answer la bus. Are we alternative? I would question ask. Alternative question answer, the data transfer from one device to another through the help of dash, that is also bus. Motherboard question in dash is a storage of all container of computer system, that is motherboard. Register it's a dash is the fastest memory in computer system, that is register. But the communication line between CPU, memory and peripheral device is called bus. The right answer is bus. Next question, dash is a register of system intermediate storage of arithmetic or logical data in a computer CPU. So it हम answer करेगा काको. Now accumulator is a special type of register always inside the processor. So right answer la accumulator. Dash is a group of commands of CPU in machine level language. Dash is a group of commands in a CPU machine level language, that is information set, instruction set, na buffer. Here the right answer is instruction set. Instruction set
Instruction set is a group of commands for CPU in machine level language. Instruction set is a group of command in machine level language. Next question, the computer performs all mathematical logical operation inside its dash. Mean all the physical mathematical logical operations are always inside its dash. Visual means visual display units. एटा हबनी visual display unit नुहे. तो memory, the computer performs all mathematical logical operation memory भी नुहे, output भी नुहे. तो आंसर ले कौन ना CPU जे processor. तो processor always perform both logical and mathematical calculations. Next question, the pattern of printed line and most products are called as. The pattern of printed lines as most products are barcodes. The alternative questions are same thing. Dash scanner converts digital data corresponding to its line or bar format, that is also barcode. So dash scanner basically used in supermarket, that is also barcode. So it will have the pattern of printed lines or most products are called barcodes. The OCR recognize the dash of the character with the help of light sources. The OCR recognize the dash of the character with the help of light sources. So options such as size, shape, color, none of these. So answer hame kariya answer kariya shape. Shape is of the character with the help of light sources. Next question, all the deleted files goes to dash. जेते हमें file को delete करिवा actually से कोडी जीवा ना all the deleted files goes to recycle bin. तो recycle bin is a special storage locations. All the deleted files can be stored. और recycle bin ना गोटे question सास्ते केमती. Now all the deleted files goes to recycle bin is located on dash now desktop. से question भी आस्ते दे desktop actually recycle bin रही था है. Next question आस्ते कौन? Now dash is a special use spaces used for storing deleted file, that is also recycle bin. So taskbar question कौन आसे? Now dash bar is always present at the bottom of desktop window, that is taskbar. और toolbar question केमते आसो? ना toolbar question आसो जे dash bar helps us to quick access some commonly used command, that is answer करबा toolbar. Toolbar is a special type of option used to access some commonly used command. So 80 questions all the deleted files goes to recycle bin. Now all the deleted files always goes to recycle bin. So answer is recycle bin. Next question, data and times are available in the desktop part in where the data and times are present in desktop part white location. Now date and time is always present on right side of taskbar. So here the right answer is taskbar. Taskbar is a special type of bar always present bottom of the desktop window. So date and time are available on right side of taskbar. Next question, which of the following refers to the rectangular area of displaying information and running program? Which of the following refers to the rectangular area of displaying information and running program? The right answer is window. Window is a special type of rectangular area where all the information are always displayed on windows. Title bar, ribbon, status bar, view and the document workspace are component of dash program. So title bar, ribbon, status bar, view and document workspace are a component of dash program. Now Windows program. In Windows program, in Windows OS you can always deal with title bar, icon, ribbon, status bar, view, ruler line, etc. always present on Windows operating system. So answer कौन करेगा ना window. Window is a special type of program which is used to show title bar, ribbon, status bar, view and document workspace component of the Windows program. Next question है
Menus are the part of a dash. Menus are part of a dash hardware. User interface status bar na monitor. So menu is a part of a user interface. Menu is a part of a user interface. Menu is a part of user interface. It's not a hardware. It's not a status bar. It's also not a monitor. It's also a part of a user interface. So menu is a part of user interface. Next question, which menu selected to cut, copy, paste? ता माने हमें cut, copy, paste को ऑप्शन पाइबा देखो फाइल मेनू तो केबे पाइबार नहीं, टूल्स मेनू तो नहीं, स्पेशल नहीं, तो एडिट मेनू cut, copy, paste पाइबा तो अप टू 2003 पर्यंत हमें कोड पाइले ना एडिट मेनू ने cut, copy, paste पाया बट नाउ सी जो cut, copy, paste हमें कोड पाइबा ना होम रो क्लिपबोर्ड पाइबा होम रो गोटे क्लिपबोर्ड टैब अछि सेही तरह हमें कट कॉपी पेस्ट पाइबा किंतु आगुर हमें कहतल पाउतला ना एडिट मेनू रे तो 2003 पर्यंत एडिट मेनू ने थिला 2007 ऑनवर्ड्स थ्रू सेटा होम रो कुड रहला ना होम रो हमरो क्लिपबोर्ड टैब रे रहला कट कॉपी पेस्ट Next question. Which menu is selected to cut, copy, paste? That is edit menu. Help menu is available at which button? तामने को menu रे help पाइबा हमें तो help generally हमें को button ने पाइबा ना start button ने पाइबा तो help generally हमें start button ने पाइबा थवारो answer कलिबा start button ताला एम्ड बोली सेमते किछि बटन ही नाही टर्न ऑफ बटन नाही रीस्टार्ट बटन नाही ओनली को बटन अछि ना स्टार्ट बटन ने हमें कोन पाइबा ना हेल्प मेनू पाइबा which of the following operation not related with ms word तो ms word को फीचर साथ रे अवेलेबल नाही which one is not present in ms word option तो page layout already exists mailing exists format painter is also exists but antivirus not exist in PowerPoint sorry not exist in MS Word so which of the following operation is not related with MS Word that is antivirus is a not related with the MS Word document so right answer is antivirus next question is about in order to choose the font for a sentence in a Word document in order to change the font for sentence on a Word document actually जो font हमें खोजु चे सेटा को मेनू रु पाई परिबा ना select font in the format menu select font in the edit menu select font in the tools menu select font in the view menu देखो select font in the format menu actually format menu नहीं font अछि किंतु edit menu font नहीं कि tools menu font नहीं कि view menu font भी नहीं तो हमें select font in the edit menu तो right answer कौन करिबा ना select font in the edit menu next question is about when computer users does a document the change its appearance that means when computer users does a document they change its appearance but to changing the appearance of a document dash option is used to changing the appearance of a document dash option is used to changing the appearance of a document that is to changing the appearance of a document we can use format answer is format कारण सेव रे किछि चेंज होबार नाही कि क्रिएट रे चेंज होबार नाही कि एडिट रे चेंज होबार नाही एडिट रे क्वेश्चंस किंतु पढ़े ना एडिटिंग मींस चेंजिंग थ्रू द existing document editing means out a question as editing means reading to the document then dash na then correcting your errors that is editing तो edit रे appearance change हमने only format रे appearance change हम सेति पे आंसर है format next question ms excel is used for that कौन पाई हमें ms excel यूज करबा तो ms excel कौन पाई यूज करबा ना लेटर राइटिंग पाई ना स्प्रेडशीट शीट कैलकुलेशन पाई ना प्रेजेंटेशन पाई ना पेंटिंग पाई लेटर राइटिंग पाई जनरली हमें कौन यूज करे ना वर्ड यूज करबा एमएस वर्ड आ स्प्रेडशीट पाई कैलकुलेशन पाई एक्सेल यूज करबा
आ प्रेजेंटेशन पाई पावर पॉइंट यूज करबा पेंटिंग पाई एमएस पेंट यूज करबा तो सेति पाई राइट आंसर कहला ना स्प्रेडिंग स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस पाई हम कोन यूज करला ना एक्सेल जनरल यूज फॉर स्प्रेडिंग स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस the file responsible for starting ms excel माने हला जे ms excel ओपन करिया कहले हमें को फाइल दरकार ms.xls नुहे ms.ex भी नुहे excel.ex is the right answer to open starting msl excel.com भी नुहे तो the file responsible for starting ms excel option is excel.exe excel.ex is the right answer. Next question asla anything that is typed in a worksheet appear in the dash ना anything in a type in the worksheet appear in the dash जेतला हमें worksheet रे गोटे सेल ले किछि टाइप करबा तो simultaneously को जगह रे ऊपर देखा जीव ना in the formula bar in the formula bar only na in the active cell only na in both active cell and formula bar na all of the above तो वर्तमान जेते हमें टाइप करबा formula bar रे भी शो करबो active cell रे भी शो करबो सेते में आंसर करबा इन both active cell and formatting formula bar active cell and formula bar तो एठी आंसर करबा C is the right answer now in the both the cases you can show the typed text in a cell जेते हमें cell रे टाइप करबा तो हमें कोड पाइबा ना फार्मूला रे पाइबा एक्टिव सेल रे पाइबा तो राइट आंसर करबा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ला व्हिच ऑप्शन विल यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म. हेडिंग जेते हमें फॉर्म रे हेडिंग करबा एटा होची एक्चुअली एक्सेस रो क्वेश्चन. एक्सेस रो क्वेश्चन तो एक्सेस रो क्वेश्चन ने कोठी हमें जेते कोथ रे ऐड करले से ऊपर डिस्प्ले हबो ना लेबल ले ना टेक्स्ट बॉक्स ना ऑप्शन ग्रुप ना इंसर्ट रे सेमति किछि फीचर्स भी नाही. ऑप्शन ग्रुप रे भी हेई परिबनी. टेक्स्ट बॉक्स टाइप ने ओनली यू कैन यूज इन लेबल जेतला में अप्लाई करबा व्हिच ऑप्शन विल यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म दैट इज लेबल इज द राइट आंसर टू यूज हेडिंग इन द फॉर्म. तो आंसर हला लेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सटेंशन नेम ऑफ सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल. मानेला जेतला में एक्सेल रे गुटे फाइल टाकू सेव करबा तो एक्सटेंशन रे फाइल को सेव करिया को एक्सटेंशन नेम हबो देखो गोटे अछि .xlx गोटे .xs गोटे .xis गोटे xll. तो एठी हम जेते बेले अप टू 2003 जेते हम एक्सेल रे गुटे फाइल सेव करूथले तो .xls होतला किंतु वर्तमान 2007 ऑनवर्ड्स रे जेतला हमें फाइल को सेव करछे .xlx होची. एक्चुअली राइट आंसर ला xlx. तो हमें जेतले फाइल टाकू एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट 2007 ऑनवर्ड रे सेव करिबा तो सेटा ऑलरेडी सेव हो .xlx रे. पावर पॉइंट में भी स्टार्टेड यूजिंग डैश द को ऑप्शन सहायरे हमें पावर पॉइंट को स्टार्ट करि परिबा. पावर पॉइंट में भी स्टार्टेड यूजिंग डैश ना जेतल केमते स्टार्ट करबा स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस पावर पॉइंट ठीक अछि. आदरे में आप ओपन करि पारे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम को जाएगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एमएस पावर पॉइंट तर प्रेसिंग विंडो आर की विंडो की प्रेस आर माइले को बॉक्स आसबो ना रन बॉक्स then typing power pnt and press enter. जितना में रन बॉक्स रे पावर पीएनटी करी के ओके मारिबा सेटा में पावर पॉइंट ओपन आबो तो सी आंसर अछि बोथ ए एंड बी. तो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी. तो इन बोथ द केसेस यू कैन ओपन पावर पॉइंट. तो राइट आंसर ला बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पावर पॉइंट हेल्प्स टू क्रिएट ए mix of to make the presentation lively and interesting. पावर पॉइंट रे को ऑप्शन यूज करले हमें लाइव एंड इंटरेस्टिंग करि पारे. जेमते आगे फास्ट हैला ऑडियो वीडियो ट्रू तो ऑडियो वीडियो पकेइला हमें पावर पॉइंट को मोर इंटरैक्टिव एंड लाइव करि पारे इंटरेस्टिंग करि पारे. आल्सो टेक्स्ट एंड टेबल लिस्ट मैं इमेज एंड ग्राफ तो एथे आंसर करियो ऑल दे अबव.
तो ये जो तीनटा ऑप्शन साहाय्य रे हमें पावर पॉइंट को मोर लाइव एंड इंटरेस्टिंग करि पारे सेति पे आंसर करबा ऑल ऑफ दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अनचूज फाइल न्यू डैश कैन बी चूजन टू स्टार्ट ए प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन ओपन करिया कहले ओपन करिया कहले फाइल मेन को जिबा न्यू रे क्लिक करबा तापर कोन करिया पड़ियो ना फर्स्ट वन इज ब्लैंक प्रेजेंटेशन करि पारिबा थीम्स आइदर ए और बी ना नॉन ऑफ दिस। तो इठी हमें जेतले ऑन द चूज फाइल डैश वन वी कैन चूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आंसर करबा ब्लैंक प्रेजेंटेशन इज द राइट आंसर टू चूज कैन बी चोजन टू स्टार्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है which item contains text graphics chart sound video etc in PowerPoint ऑप्शन। तो PowerPoint ऑप्शन ने सारे इक्वार गला प्रदीप तो डाकली रे काम करनी कोन डाकली दे काम लाइव चलची तो which item contains text and graphics chart sound video etc in PowerPoint। तो PowerPoint एक्चुअली को ऑप्शन सा में यूज करिया दरकार माने स्लाइड्स फोल्डर हैंडआउट डेस्कटॉप स्क्रीन आंसरला स्लाइड and slide is a on-screen document where the user can enter and edit text as well as objects in PowerPoint। तो आंसर ला स्लाइड जिमती की वर्ड रोचे हमर पेज एक्सेल हेला शीट सेमती पीपीटी रोचे स्लाइड। तो slide is a electronic page where the user can enter and edit data as well as objects in PowerPoint। तो which item contains text graphics chart sound video etc in PowerPoint। तो आंसर ला slide। Slide is a storage container of a PowerPoint where you can insert text, graphs, charts, sound, video, etc. Next question, in MS PowerPoint, in order to see all the slides on one screen, use dash। Now, in MS PowerPoint, in order to see all the slides on the one screen, we can use slide shutter view। So, slide shutter is a special type of view used to show all the slides as a thumbnail and also rearrange the slides। Another question arises from slide shutter view is that now to view the slides as thumbnail and also rearrange it, that is also slide shutter view। एठी भी हम आंसर करबा slide shutter view। तो in MS PowerPoint in order to see all the slides on one screen, that is slide shutter view। Next question is which view in PowerPoint can be used to enter speaker comments। तो आदर हमें speaker comment को व्यू रे देई परिबा नॉर्मल व्यू रे देई परिबा नहीं। तो स्लाइड शोर व्यू रे देई परिबा नहीं, स्लाइड शॉर्टर व्यू रे देई परिबा नहीं, केवल गोटे व्यू रे देई परिबा नोट पेज व्यू। तो नोट पेज व्यू इज स्पेशल टाइप ऑफ यूज्ड टू एंटर स्पीकर कमेंट्स इन PowerPoint।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेशनशिप क्रिएटेड बिटवीन हाउ मेनी टेबल्स तो रिलेशनशिप आसले माने तो रिलेशनशिप आसले माने भाबियो जे कोथन एक्सेस रा तो एमएस एक्सेस तो रिलेशनशिप जेते आमे तयारी करिवा केतरा टेबल भितर रिलेशनशिप तयारी करिवा गोटे टेबल भितर दुईटा टेबल भितर मा तीनटा टेबल भितर तो जनरली आमे दुईटा टेबल भितर आमे रिलेशनशिप तयारी करि परिबा तो आंसर ला 2 Which of the following data type automatically generate a consecutive number? एक क्वेश्चन भी एक्सेस रो आछे ते को डाटा टाइप यूज करले हमें कंजुगेटिव नंबर ऐड करि परिबा तो आंसर ला ऑटो नंबर तो ऑटोमेटिक जेतला हमें ऑटो नंबर ऐड करिबा तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 ऑटोमेटिकली हम तुमको किसी सेलेक्ट करिया पड़बनी किंतु मेमो इज आल्सो ए डाटा टाइप इन एमएस एक्सेस its length is 65 character it's a text type of data 65000 character rakhibo it's a text type of data number is numeric data text is text data r length टिके कम अछि r length होची 65000 r length होची 127 not 255 length तो आंसर करबा तो ऑटो नंबर is a special type of data type used in ms access used to increase the number by 1. Next question is the most powerful commercial DBMS package is dash. Which one is the best powerful commercial DBMS package is MS SQL Server, MS Accessor, MS SQL or Oracle. Now, Oracle is the special type of most commercial proprietary DBMS package that is database management system. So database management system or special commercial use button Oracle to answer kariba Oracle. What are the different views to display a table तेतला में टेबल को डिस्प्ले करिबा केते प्रकार डिस्प्ले करि परिया तो ये भी गोटे एक्सेस रो क्वेश्चन डाटा शीट व्यू रे डिस्प्ले करि पारे दैट इज डिफॉल्ट व्यू क्वेश्चन पड़े डिफॉल्ट व्यू ऑफ एक्सेस ऑफ ए टेबल इज दैट इज डाटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू साथ रे भी हमें ओपन करि परिबा और पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट यूज रे ओपन करे तो आंसर हैला ऑल द अबव बेटी हम आंसर करे कोन ना ऑल द अबव ऑल द व्यू कैन ओपन इन to display a table in case of power in case of ms access next question la what function display row data in a column or column data in a row who function साहाय्य रे row को हम column को नहीं पारे column टा row को आने पारे what function display row data in column and column data in row answer la transpose transpose is a special type of function used to convert row data to column and column data to row in excel package रे row data को column data को row करया खले तमे transpose रो function न help नहीं थाओ next question la dash protocol helps to send an email message तो email message को protocol को send करया खले को protocol दरकार that is SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. Simple Mail Transfer Protocol. This protocol helps us to send an email message. Also, POP is there. POP means Post Office Protocol. एक क्वेश्चन के इंदासना dash protocol to receive an email message. सेटी आंसर करियो POP. और ARP होची एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्वेश्चन के अंदर आसे ना डैश प्रोटोकॉल हेल्प्स अस टू हार्डवेयर एड्रेस ऑफ इन अ वेब दैट इज कोन करबे सेटा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल करियो ICMP गोटे प्रोटोकॉल अछि इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल इंटरनेट कंट्रोल message protocol एक क्वेश्चन आसे dash protocol helps us to error alert message that is ICMP internet control message protocol तो एठी क्वेश्चन थला dash protocol helps us to send an email message आंसर करू SMTP is a special type of protocol used to send an email message एठी गोटे क्वेश्चन आसला dash is the set of rules in programming language रे set of rules का कोआ जाय
ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रो सेट ऑफ रूल्स को सिंटैक्स कुआ जाय जदी हमें एठी रहला ना डैश इज द सेट ऑफ रूल्स जदी क्वेश्चन एति की थिबो आंसर हला प्रोटोकॉल किंतु डैश इज द सेट ऑफ रूल्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करबा सिंटैक्स और जदी पल्ला डैश इज द सेट ऑफ रूल्स सिमेटिक कंस्ट्रक्ट ए स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इति आंसर करबा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कीवर्ड क्वेश्चन आसे कोन ना dash is a special type of but dash is a reserved word for its own use in programming language से जगह हम करें keywords type is a reserved word basically used in programming language से थी आंसर करबा keywords किंतु जदी हम एठी यूज करे माने syntax काई करले ना dash is the set of rules in programming language आंसर कोन करबा syntax is a special type of but syntax is the set of rules is basically used in programming language but syntax is the way of executing the command to answer kale syntax next question asla next question asi does variable store more than one value at a time को variable साच रे एक रु अधिका does variable store more than one value at a time को variable ले more than one value रखि पारिबा एठी हमें करबा array variable array is a special type of variable used to store more than one value at a time question में आसे dash variable initialize only one that is static variable जब इससे question ऐसा ना dash variable initialize only once that is static variable तो static variable always initialize only once किंतु एटी question थला ना dash variable store more than one value at a time that is array variable is for more than one variable question भी array आसे अरे केमती क्वेश्चन आसे ना आरए जे डैश डाटा स्ट्रक्चर गोटे क्वेश्चन आसे आरए जे डैश डाटा स्ट्रक्चर तो आरए जे डैश डाटा स्ट्रक्चर आंसर करबो लिनियर डाटा स्ट्रक्चर आ गोटे क्वेश्चन आसे आरए जे डैश मेमोरी स्ट्रक्चर तो मेमोरी स्ट्रक्चर मींस आरए जे डैश मेमोरी स्ट्रक्चर एथि तला आंसर करबो लिनियर होमोजेनियस एंड कॉन्टिग्युअस मेमोरी स्ट्रक्चर तो इठी तो क्वेश्चन थला dash variable store more than one value at a time that is static that is array variable array is a special type of variable used to store more than one value at a time default left and right margin is dash inch in ms word document ro default left and right margin is dash inch देखो जेतेले क्वेश्चन आसो ना डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इज एमएस वर्ड इन डैश इंच एडी 1 इंच अछि 1.25 इंच बोथ आर ट्रू अछि जदी अप टू 2003 को देखिबा अप टू 2003 एमएस ऑफिस तो केते करबा ना 1.25 इंच किंतु डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इज डैश इंच इन एमएस वर्ड इतले करछि ना 2 पॉइंट डिफॉल्ट कोड जिवो ना 2007 ऑनवर्ड्स को तो 2007 ऑनवर्ड्स को गले तुमे पाइबो 1 इंच तो डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन 1 इंच तो एठी एतले कहबा तो आंसर हैला 1 इंच द राइट आंसर जदी कि चेंज क्वेश्चन पढिथिबो तो डिफॉल्ट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन इज डैश इज एमएस ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट 2003 सेठी करियो 1.25 इंच किंतु एठी 2003 न कहकी डिफॉल्ट किछि भी मेंशन करनी सेठी पे आंसर करबो 1 इंच द राइट आंसर एदिक थिला आजिर 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओ ट्रिपल एस आई आरआई रो थैंक यू अरे बंद कर दे
ତୁ ଗଳି କଣ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ?